talk to the senior puni or Your to Lordship, anyone. Can this be done? that is आप ये delegation of power का पढ़ that is the लीजिए ना delegation of power. That कौन is सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. my lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My lord, Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to two more judges, a committee of 3 judges. yes, my lord. ठीक है? अब इसमें अगर वो डेलीगेशन का एलिमेंट है तो यस इन एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स द कोर्ट कैन डेलीगेट सम ऑफ द पावर्स टू वन ऑफ द जजेस, be it the chief justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules. Those have a certain sanctity attached to them. My lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a तो ये- delegation तो ये of power. मैं ये समझो Sir, this is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the Your Lordship, cause list or the benches. that it's- Chief it's- Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. Then So the- this is not the case of delegation. then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can withdraw or replace those powers, or the Parliament can do that. Is The it your Parliament cannot do argument- that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. Aye? Would be determined by the Parliament. My lord. I mean, अगर मतलब उनके then it- पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Look, My that would- question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament, Parliament is the federal government बनाएगी rules. my lord, if I may, I mean, there is then no end to there it. is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them systematically. नहीं आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है कितना वक्त आप लेंगे My lord, if your lordship go uninterrupted, maybe आप- half an hour. my ठीक है हम आप वापस आते हैं My lord. ये learned counsel एक question जो है वो ज़हन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice.
whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? I will answer you very. चलिए वापसी में आते हैं हाँ Well, नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत जारी थी। फिल वक्त के लिए वक्फा लिया गया है। कुछ ही देर के बाद ये समाअत दोबारा शुरू की जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। वकला की जानिब से दलाल जारी। कोशिश है कि केस को सुनकर आज ही फैसला कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 46,727 पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए और 65 पैसे पर पहुंच गया। निगरान वजीर आजम की सदारत में काबीना का इजलास। मुख्तलिफ मुआहदों की मंजूरी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा तैनात करने का फैसला। वजीर आजम का हुनरमंद अफराद क़ुव्वत की बरामद बढ़ाने के लिए इक़दामात पर जोर। पेशावराना तालीम और फनी तरबियत के प्रोग्रामों को बैनुल अक़वामी मार्केट से हम आहंग करने की जरूरत है। अफराद क़ुव्वत को असरी तकाज़ों के मुताबिक हुनर की फराहमी के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। फनी और पेशावराना तरबियत के तमाम मराकज़ को फ़ाल किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे।